All right, assalamu alaikum everyone. I hope you guys are all doing well. So today we are going to be doing this paper, May-June 2022, paper 3, variant 3. Okay, so that's the plan for today. Walaikum assalam, Arib. We are already done with the other two variants of paper 3 from this session, paper 3.1 and 3.2. And we're also done with most of the other papers from this session as well. We're done with all P1s, and we will be doing the remaining S1s tomorrow and the remaining P1s, remaining M1s, sorry, on Saturday, inshallah. So we'll be done with the June 2022 session this week. On Sunday, I will be doing one mechanics paper from October, November, and for the next week or so after that, we will only be focusing on paper 1 and M1 because वो papers आपके Cambridge के पहले आ रहे हैं, तो हम उनसे start कर रहे होंगे. ठीक है. All right. Walaikum assalam, Hussain. So just a reminder before we start, you would find a lot of other helpful content in the description below as well. You can see that I have posted all the recordings of my recent crash course for all papers, paper 1, paper 3, M1, and S1. So these are the 4 papers that I teach. All the syllabus, the complete syllabus recordings are uploaded there. You can find the links in the descriptions. There are some quick revision videos posted as well. A lot of students find those videos very helpful right before exams for revising. You can find that playlist there as well. And also there's a yearly past papers playlist. जिसमें जो अभी तक मैंने papers solve किए हैं, yearly past papers, you can find all of them there as well. So there are a number of papers from 2021 and 2022 there. I've also solved 2023 papers now. So वो भी आपको March 2023 के जो papers, of course, not June 2023, in case you thought we also have June 2023. That's not the case. March 2023 हमने कर लिया हुआ है. You can also find that there. Now, let's start with this paper. Okay, so I'm gonna set something up here and then we can start. Okay, so we are not going to go through the instructions. We have done that so many times before. So let's jump into the paper right away. Okay, so इस सेशन का हमने 3.1 I think paper already एक पूरा किया हुआ है और 3.2 के हमने कुछ selected questions किए थे. अब इस पेपर से भी हम पूरा पेपर नहीं, ये भी पेपर हम पूरा नहीं कर रहे होंगे. We'll be doing most of the questions, but I'll be skipping some of the questions that are very straightforward. For example, this first one, it's a pretty standard modulus inequality question. These are easy 4 marks that you have in this paper. You can try this. In fact, let me actually just do this as well. इसमें A आ रहा है, so let's actually do this, okay? In case anyone is confused with it. And then we'll see जो मुश्किल questions, जो ज़्यादा आसान questions होंगे, I'm going to skip those questions, okay? We'll see how many of them are there. Let's start with this one. Question number 1 from this paper. It says, find in terms of A the set of values of X that satisfy this inequality where A is a positive constant. अब modulus inequalities आपके पास जो भी होती है उनको solve करने का हमारे पास एक standard method होता है that works for every single kind of modulus inequality. So how do we start with this? हम क्या करते हैं? हम कहते हैं let's treat this as an equation first of all. Okay, so it's 2 into modulus of 3x plus A that equals modulus of 2x plus 3A. And from this, what we do is we find the 2 cutoff points that we have. Okay, हम कैसे करते हैं? हम modulus remove कर देते हैं और किसी भी एक side पे plus minus लगा देते हैं. Okay, so we have 2 into 3x plus A that equals plus minus 2x plus 3A. Okay, so that gives us 2 equations. One is 6x plus 2a equals, if we use the plus sign here, that gives us plus 2x plus 3a. And the second possible equation is 6x plus 2a. That equals minus 2x minus 3a. Okay, now we're just going to solve these 2 equations, find the 2 cutoff points that we get from this.
फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं हमारे पास क्या आता है 6x minus 2x, that's going to give us 4x, that equals 3a minus 2a, which is a. So x turns out to be 1 over 4 times a from this. Okay, a हमारे पास ये cutoff value आ गई. Now let's solve the other equation there as well. 2 minus 2x goes to the other side, 6x plus 2x, that gives us 8x. 2a goes to the right side, and that gives us minus 5a on the other side. And from this, we get x equals minus 5 over 8 times a. Okay, finding these two values gets us 2 marks out of those 4 marks. Okay, so we get 2 marks up to this point. लेकिन अब आपको देखना है कि कौन से रीजन सेटिस्फाई करते हैं. इसके अलावा आप एक नंबर लाइन यूज कर सकते हैं. नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट्स को मार्क कर देंगे. ठीक है, these are the 2 points that we have. The 2 cutoff point, छोटा वाला पॉइंट कौन सा है, minus 5 over 8 है, और बड़ा वाला पॉइंट कौन सा है, 1 over 4 times a. Now these 2 points divide this number line into 3 different regions. One region is to the left of minus 5 over 8, one region is in the middle, and one region is to the right. In general, we have to take one value in each of these 3 regions, right? However, this is a case where we have modulus sign on both sides. तो यहाँ पे remember हमने ये किया हुआ है कि आपके पास 2 ही possible cases हो सकते हैं. या तो ये केस होगा कि दरम्यान वाला region true होगा और sides वाले regions incorrect होंगे. That's one possibility. The other possibility is that the middle region is incorrect and the side regions are correct. So जिस तरह quadratic inequalities में होता था, जब दोनों sides से modulus आता है ना, जब दोनों sides से modulus आता है, इस केस के अंदर हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ एक रीजन चेक कर लें, सबको पता चल जाएगा ये फर्स्ट वाला केस आ रहा है या सेकंड वाला केस आ रहा है. ठीक है, सो आप सेंटर वाला रीजन चेक कर लें, मिडिल वाला रीजन, उससे आपको पता चल जाएगा इनमें से कौन सा केस है. ओके, लेकिन ये सिर्फ तब कर सकते हैं जब दोनों साइड से मॉडुलस है. इस केस में दोनों साइड से मॉडुलस है, इसलिए हम सिर्फ मिडिल वाला रीजन चेक कर सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी इनफ. अब मिडिल रीजन में लेट्स टेक सम नंबर. सो वी हैव minus 5 over 8 here, 8 here, we have 1 over 4a here, and we know that a is a positive constant. That means 0 is going to be in the middle, right? तो आप जीरो लेके दरम्यान में एक 0 नंबर ले लें. रिमेंबर द कट ऑफ पॉइंट्स आर दीज 2. दरम्यान में आपने 0 ट्राई कर लिया. यू कैन से 0 times a if you want to take something in terms of a, but that's still 0. अगर आप राइट साइड पे कोई नंबर लेते वो a के टर्म्स में होता, फॉर एग्जांपल 1 times a. लेफ्ट साइड पे कोई नंबर लेते वो भी a के टर्म्स में होता, फॉर एग्जांपल -2a. ओके, लेकिन 0 times a is just 0, so we can take 0 as well. Let's see what that gives us. अगर हम 0 ट्राई करते हैं original inequality के अंदर, what is the original inequality? 2 into 3x plus a, that is less than modulus of 2x plus 3a. उसके अंदर आप x की वैल्यू 0 इनपुट कर दें, देखिए आपके पास क्या आता है. Okay, let's do that. Let's input x equal to 0 and let's see if that region turns out to be correct or not. So we have 2 into modulus of 3 into 0 plus a, that's less than 2 into 0 plus 3a, and this gives us 2a less than 3a. Is that correct? That is correct. 3a is indeed bigger than 2a, so this is correct. That means the middle region has to be correct and the regions on the sides are supposed to be incorrect. ठीक है, तो हमारा solution फिर इसमें क्या हो जाएगा? Our final solution in this case turns out to be x between these two numbers, minus 5 over 8 and 1 over 4. We say x is between minus 5 over 8 times a and 1 over 4 times a. This is the inequality. This is the result that we get from this. Okay, and that's our final answer. ठीक है, ये आपकी inequality होगी. जब इस तरह के केसेस आते हैं दोनों साइड से मॉडुलस, तब आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं if you want, राइट, स्क्वायर करके. बट रिमेंबर जब एक साइड मॉडुलस आता है ना, तब आप वो वाला मेथड नहीं यूज कर सकते. ओके, फिर आपको या तो नंबर लाइन यूज करनी पड़ती है, अगर आपने ग्राफ वाले मेथड से किया हुआ है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाला मेथड नहीं चलता. ओके, a lot of people do that mistake. Remember that would not work here. अगर सिर्फ एक साइड मॉडुलस होता. ठीक है, अहमद, yesterday stream is I think uploaded. हो सकता है वो प्लेलिस्ट में ऐड नहीं हुई हो. I'll recheck that at the end. Inshallah, hopefully I'd remember that. Okay, let's move on. The second question is, we have to solve this equation. Cos of theta minus 60, that equals 3 sine theta for
theta between 0 and 360. It's a pretty standard question. आप क्या करेंगे? Cos की double angle identity, cos की compound angle identity apply करेंगे, इसको simplify कर लेंगे. And then you can do it after that. It's not that difficult. आप ये try कर सकते हैं. It's going to become cos theta into cos 60 plus sin theta into sin 60 equals 3 sin theta. ठीक है, आप cos 60 की वैल्यू इनपुट कर दें, sin 60 की वैल्यू इनपुट कर दें, पूरे इक्वेशन को cos theta से डिवाइड कर दें, tan में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको आगे सॉल्व कर लें. ठीक है, you can do this. It's not that difficult. I'm going to move on from this one. This is very straightforward. Let's look at this one. Question number 3. Show that the equation log of 2x plus 1 with base 3 equals 1 plus 2 into log of x minus 1 with base 3. So show that this equation can be written as a quadratic equation in x. Okay, we need to show that this equation can be written as a quadratic equation in x. Now, how can we do that? We can take the log terms to one side, right? So it becomes log of 2x plus 1 with base 3 minus 2 into log of x minus 1 with base 3, and we have 1 on the other side as it is. ठीक है, क्योंकि 1 के एक टर्म में log नहीं आ रहा, बाकी 2 टर्म्स में log आ रहा है, तो log वाले टर्म्स को हम एक साइड पे लेके. Now what we can do is we can try to use division law here. But remember, division law can only be used if the coefficients here are 1 or minus 1, right? But the coefficient for the first term is 1, but for the second term, it's minus 2. तो क्या करें इसको? इस 2 को हमें पावर में लेके जाना पड़ेगा. ठीक है? So to be able to use the division law, we'll have to take this 2 to the power first of all. So it becomes log of 2x plus 1 base 3 minus log of x minus 1 whole squared with base 3, and that equals 1. Okay, इस 2 को हम पावर में लेके यहाँ पे. अब हम क्या कर सकते हैं? This is subtraction outside log. इस पर अगर division law apply करेंगे तो अंदर आके ये division हो जाएगी. So it becomes log of 2x plus 1 divided by x minus 1 whole squared. Okay, this is what we get from this. On the other side, we have 1. The base of log is 3. Now, to get rid of the log, what we can do is we can take this 3 to the other side, make it the base of 1. So it becomes 2x plus 1 over x minus 1 whole squared equals 3 raised to power 1. And that's just 3. Multiply this from the other side, and you get 2x plus 1 equals 3 into x minus 1 whole squared. Okay, so this is a quadratic equation in x now. It's better to simplify this further and write it in this form: ax squared plus bx plus c equals 0. इसको simplify कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है. We get 2x plus 1 equals 3 into x squared minus 2x plus 1. Let's simplify that side as well. That gives us 3x squared minus 6x plus 3. And now take these terms to the right side as well, and that's going to give us 3x squared minus 6x minus 2x, that is minus 8x, plus 3 minus 1, that is 2. So we have plus 2 here equals 0. This is the quadratic equation that we end up getting from this. Okay, 3x squared minus 8x plus 2 equals 0. Let's move on. Now it says, hence solve this equation. Okay, so now this is a different equation. It's not exactly the same equation. उसने कहा इस equation को solve करना है आपने, giving an answer correct to 2 decimal places. Now, how is this equation related to what we have in the first equation? Let's compare the two. First equation में हमारे पास x के terms में आ रहा था, तो वहां पे 2x आ रहा था. 2x की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया? 4y आ गया. और x की जगह पे क्या हो गया? 2y आ गया. So essentially what has happened is, in place of x, you have 2y here. All right, in place of x, you have 2y here. तो हम क्या करते हैं? पहले तो इसी equation को solve कर लेते हैं. ठीक है? So there are 2 ways of thinking about this. या तो आप इस equation में भी x की जगह पे 2y डाल लें पहले और फिर इसको solve कर लें, या फिर आप इसी x वाली equation को solve कर लें, which is 3x squared minus 8x plus 2 equals 0. Let's solve this equation and see what we get from this. Can we factorize this? We can't. So we have to use quadratic formula here. So minus into minus 8 plus minus square root of minus 8 whole squared minus 4 into 3 into 2 whole divided by 2 into 3.
Now you'll just write values in the quadratic formula and then you'll just write down the final answers from that. ठीक है, आपको इसको simplify करने की जरूरत नहीं है, आप इसके direct answers लिख सकते हैं. ठीक है, let's see the answers that we get from this. Okay. All right, let me just do that here on my calculator now. Equation, polynomial, degree 2. Okay, so we have 3 minus 8 and 2. One value of x that I'm getting from this is, so you have to give your answers in decimals. So exact value आपको जरूरी नहीं है लिखना. X की value मेरे पास एक आ रही है 2.387. Another value of x that I get from this is 0.2792. These are the two values of x that I'm getting. ठीक है? अब at this point, you need to stop and make sure that both of these values are valid. दोनों के आप input कर सकते हैं इस equation के अंदर. Multiple values आ रही है ना x की और log है आपकी equation में, तो आपको check करना है कि आप दोनों values input कर सकते हैं. Let's just verify that. हम ये वाली equation अभी solve कर रहे थे, x वाली equation. Now think about this. This is 2x plus 1. अगर x की value positive है तो यहाँ पे तो कोई मसला नहीं होता. That's fine. Okay. However, if you think about this is x minus 1. If you have x equal to 2.387, that's okay. 2.387 minus 1, that's still a positive number. That would not be a problem. लेकिन दूसरी जो x की value आपके पास आ रही है 0.2792, that is less than 1. अगर ये value आप यहाँ पे input करते हो x minus 1 में, x की जगह पे 0.2 something आप input करते हो, तो ये log के अंदर वाला part क्या होएगा? ये negative हो जाएगा, which is going to become undefined. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे this value of x is not possible. You will have to ignore this answer. You can't leave this answer as it is. इसको आपने लिखना है कि this is not possible. इसको cross out कर दें. You have to make sure that you clearly mention that this is not correct. Okay. The other value of x that you're getting is this. लेकिन अब x की जगह पे क्या हो गया? आपके पास 2y आ गया. तो आप क्या कहोगे? 2y equals 2.387, and you'll see what the value of y turns out to be from this. Okay. So I have 2.387 divided by 2. This gives me 1.19. This is the value of y that it turns out to be. Remember, the final answer has to be two decimal places. The question के अंदर instruction दी हुई है. जब question के अंदर instruction दी होती है, you have to follow that. अगर आप नहीं follow करेंगे, आपका 1 mark उस पे कट जाएगा. Okay. 1 decimal place पे भी mark कट जाएगा, 3 पे भी कट जाएगा. So you have to have exactly 2 decimal places. All right. Let's move on. Question number 4. Okay, so now we have this curve y equals e raised to power minus 4x into tan x. It has two stationary points in the interval 0 to pi over 2. Yes, you always have to check your answers. जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर log आ रहा है, आपके पास जो भी x की वैल्यूज आ रही हैं, आपको हमेशा चेक करना है, ठीक है? क्योंकि there is going to be a possibility कि कोई आंसर satisfy नहीं कर रहा होगा. Okay, and you're welcome. Okay, let's do question number 4 now. So now it says the curve y equals e raised to power minus 4x into tan x has two stationary points in this interval from x 0 to pi over 2. We need to obtain an expression for dy over dx and show that it can be written in this form, where a and b are constants. Okay, let's do this. Y equals e raised to power minus 4x into tan x. Now, you see it's a product. Product को आप directly differentiate नहीं कर सकते. You have to use the product rule. The first term is, let's say u, this is v. Remember what the product rule is. इसको differentiate करेंगे तो आपको पास आना चाहिए uv dash plus vu dash. Okay, let's apply that product rule. U as it is, that means e raised to power minus 4x as it is, into v dash, that means the derivative of tan x, which is secant square x, plus v as it is, that means tan x as it is, into the derivative of e raised to power minus 4x, which is e raised to power minus 4x as it is. However, you have to multiply by the derivative of minus 4x as well, which turns out to be minus 4. आपको इससे multiply करना पड़ेगा. ठीक है? Now we simplify this and we have to somehow prove that this becomes this form.
Now, how can we do that? We could take e raised to power minus 4x common, right? That has to be outside. So let's take that common first of all. So it simplifies things for us. It becomes e raised to power minus 4x into secant square x plus, or in fact minus, because we have minus 4 here. तो अब यहाँ पे क्या करोगे? minus 4 रखोगे into e raised to power, no, in fact, that is common outside, minus 4 into tan x. This is what we have now. All right. अब देखें उसने क्या करने के लिए कहा है. उसने कहा है आपने इसको किसी तरह से कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर. Now that looks pretty weird, right? इस पे आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा. एक तो उसने ये किया हुआ है कि secant स्क्वायर को भी कॉमन लिया हुआ है. secant स्क्वायर तो एक टर्म में आ रहा है सिर्फ, इसमें तो secant स्क्वायर है भी नहीं. So how does that make sense? हमारे पास yes tan और secant की एक आइडेंटिटी होती है, which is 1 plus tan square theta. That's identical to secant square theta. However, for that you need tan square. This is tan. तो इसको हम secant square में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते. अगर करेंगे तो हमें square root लेना पड़ेगा, and that's going to make things very complicated. So we're not going to do that. Now notice that there's another thing here as well, and that is sine of 2x. Now where is that coming from? यहाँ पे तो हमारे पास डबल एंगल है ही नहीं कहीं पे. इसमें तो सिंगल एंगल्स आ रहे हैं. Sin 2x क्या होता है? Think about that. Sin 2x is 2 into sin x into cos x, right? तो अगर हमारे पास यहाँ पे कहीं पे 2 sin x cos x आ जाए तो हम उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? ये आपकी आइडेंटिटी होती है. आप देखिए फॉर्मूला शीट के अंदर sin 2a is identical to 2 sin a cos a. ऑल राइट. अब sin और cos हमारे पास नहीं है, उसमें कैसे कन्वर्ट करें? What you can do is you can say let's convert tan to sin over cos. Okay, because tan तो नहीं चाहिए ना आपको इस फॉर्म के अंदर, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें sin over cos में. And then think about what you can do after that. Okay, so let's can write it as minus 4 into sin x over cos x. ठीक है, हमने इस तरह लिख दिया. अब क्या करें? अब देखें आपको secant स्क्वायर कॉमन लेना है. secant क्या होता है? secant is actually reciprocal of cos, है ना? secant is reciprocal of cos. हमारे पास cos तो यहाँ पर आ गया. अगर हम इस cos को ऊपर ले जाएंगे तो ये secant बन जाएगा, लेकिन हमें secant स्क्वायर कॉमन लेना है, तो हमें एक और cos चाहिए यहाँ पे. Okay, what we can do for that is we can say let's multiply the denominator with another cos. But सिर्फ डिनोमिनेटर तो नहीं कर सकते ना, आपको ये पूरा एक्सप्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा. डिनोमिनेटर में आपको एक और कॉस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? आप न्यूमरेटर में भी एक कॉस लिख दो एक्स्ट्रा और डिनोमिनेटर में भी लिख दो. सो यू एसेंशियली मल्टीप्लाइंग बाय cos x over cos x. कैन वी डू दैट? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, राइट? हम किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी एक्सप्रेशन को हम सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या किया? cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, दोनों चीजें कर दी यहाँ पे. उसका फायदा क्या होगा? एक तो देखिए न्यूमरेटर में आपके पास कुछ उस तरह की फॉर्म आ गई है, राइट? sin 2x वाली फॉर्म. sin 2x के लिए आपको क्या चाहिए था? sin x into cos x. We have sin x into cos x here. और डिनोमिनेटर में आपके पास हो गया cos x into cos x, which is cos square x. इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये secant स्क्वायर बन जाएगा, और फिर हम secant स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, right? So let's try and do that. We have e raised to power minus 4x into secant square x minus 4 into sin x into cos x. अब देखें डिनोमिनेटर में आपके पास दो cos आ रहे हैं. इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये देखें cos स्क्वायर होगा ना, ये जब ऊपर जाएगा तो ये secant square x बन जाएगा. And that solves another problem for us, and that is हम इसमें से secant square भी common ले सकते हैं. We can write this like this: e raised to power minus 4x into secant square x multiplied by 1 minus 4 into sin x into cos x. अब देखें बाहर वाला पॉइंट तो सॉर्ट हो गया, राइट? बाहर हमें क्या चाहिए था? secant square चाहिए था और e raised to power minus 4x चाहिए था. We have e raised to power minus 4x here and we have secant square x here. Now we think about the part that's inside. sin 2x बनाना है इसको,
राइट, और हमें पता है sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। सो इस 4 sin x cos x को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख देते हैं, हम कहते हैं लेट्स राइट 4 as 2 multiplied by 2। तो मैं 4 कैसे लिखने लगा, 2 into 2 sin x cos x, right? We can do that, right? 4 sin x cos x, मैंने 4 को ब्रेक कर दिया 2 into 2 में, so it becomes 2 into 2 sin x cos x। And now we have e raised to power minus 4x into secant square x into 1 minus 2, and this thing is sine of 2x. So it becomes 1 minus 2 sine 2x. That is what dy over dx turns out to be. ये आपको करना था, इस फॉर्म में आपने लिख दिया। ऑलराइट, तो आप उस फॉर्म में देखें, a की जगह पे क्या आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है, और b की जगह पे -2 आ रहा है। Okay, that was quite tricky, to be honest. If you're able to get to this point, जहाँ पे आपने differentiate कर लिया, you should get 2 marks for that, I think. And then after that, you would get 2 more marks if you're able to convert it to this form exactly. ठीक है, that was the first part of this question. The second part says, hence find the exact x coordinates of the 2 stationary points. Stationary points कैसे find कर सकते हैं? आपके पास derivative आ गया, derivative को 0 से equate कर दें. That's all that we have to do here. So dy over dx, what is that? Dy over dx is e raised to power minus 4x into secant square x multiplied by 1 minus 2 sine of 2x. What we do is we put this derivative equal to 0. ठीक है, अब ये तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, e raised to power minus 4x secant square x and 1 minus 2 sine 2x, right? अब आपके पास एक प्रोडक्ट है और उसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है या तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 होगी, e raised to power minus 4x should be 0, that's one possibility, or secant square x should be equal to 0, that's another possibility, or 1 minus 2 sine 2x, this should be equal to 0. We get 3 equations from this. आप फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है e is a positive number, किसी भी पॉजिटिव नंबर की आप जो मर्जी पावर ले लें, it can never give you a negative answer, right? अगर आप log लेके सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे इसको, आप देखेंगे राइट साइड पे ln 0 आपको एरर दे देगा, so you won't get anything from this. ठीक है, so first equation say you don't get any solutions, you say this is not possible. The first one is not possible. Let's do the second one now. Secant square x equals 0. Now, how do we think about this? Secant square x equals 0. First of all, what we can do is we can take square root on both sides, right? And that gives us secant x equals 0. Okay? अब secant x की वैल्यू 0 आ गई है, अब क्या करें? अब हम ये कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लें. That gives us 1 over cos x equals 0. And that gives us cos x equals 1 over 0. Essentially, cos x की value undefined आ रही है या फिर infinite आ रही है. Is that possible? Cos x हमें पता है -1 और 1 के दरम्यान में होता है. तो इससे हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आता. This also does not give us anything. If you remember the graph of secant x, तो आप बेशक यहीं पे इसको इग्नोर कर सकते हैं. आपको पता है secant x का ग्राफ कभी भी 0 को टच करता ही नहीं है, राइट? वो एक्स एक्सिस को टच करता ही नहीं है. So if you know that, if you remember that, आप इसी पॉइंट पे इग्नोर कर सकते हैं. But if not, आप इसको cos में कन्वर्ट कर लें and you would realize this is not possible as well. Second equation से भी आपको कुछ नहीं मिलता. The only equation that you're left with is this third one. Now let's see what we get from this. Take 2 to the other side and take 1 to the other side and divide by 2. That gives us sine 2x equals 1 over 2. Now in the question, it's given that x is between 0 and pi over 2. All right. But remember, x is not the angle here. The angle that we have here is 2x. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं?
we can use a substitution. We can say let a equals 2x. Okay, और हमें पता है कि x की रेंज क्या दी हुई थी उसने, from 0 to pi over 2. 0 was included, pi over 2 was not included. इसको a में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, आप 0 इनपुट करें इसके अंदर तो आपको 0 मिलता है. So the lower limit for a is going to be 0 as well. If you input pi over 2 here, that gives you 2 into pi over 2, which is pi. So angles जो आपने अब देखने हैं वो 0 से pi देखने हैं, 0 से pi over 2 नहीं देखने हैं, 0 से pi देखने हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं ये क्या आएगा. Sin of a equals 1 over 2. What we do is we find the basic angle first of all. Sin alpha equals 1 over 2. Let's find the basic angle. The angle is in radians, right? Radians में आपको क्या मिलेगा? Sin inverse of 1 over 2. That should give you pi over 6. Okay, I'm sorry about that. I got disconnected. I think I need to redo some part of this. Can somebody please confirm if there was any lag in my voice until now? Because I just figured out my LAN was not connected. तो Wi-Fi चल रहा था. Wi-Fi अक्सर जो है उस पे signals मेरे सही नहीं आ रहे होते यहाँ पे. So let me know if there was any lag in my voice until now, and I'll just redo some part of this as well, because I think ये दरम्यान में disconnect हो गया था. Let me just check again. Is this working? Yes. This is also not working. Okay. I think I'm back now. All right, good.
So let's resume. I think I got disconnected here and I need to redo some of this part. I can just erase this. Okay, so now let's look at the third equation that we have, that is 1 minus 2 sine x equal 2 sine 2x equals 0. Let's solve this one now. What do we get from this? Take 1 to the other side and divide by 2. That gives us sine 2x equals 1 over 2, right? अब इस equation को हमें solve करना है. Now let's look at the interval that we're given. The interval is from x equals 0 to x equals pi over 2. Pi over 2 included नहीं है, so interval is between 0 and pi over 2 like this. Okay, so one way to do this is you use a substitution. Angle क्योंकि आपका पूरा 2x है, x नहीं है, आप क्या कह सकते हो? Let's say a equals 2 times x. All right? And then write this equation in terms of a. So it becomes sine of a equals 1 over 2. Now this is something that we can solve, but you also have to adjust the interval according to that. a की values किस range में होंगी, किस interval में होंगी? आप 0 input करें इसके अंदर, तो a की corresponding value क्या आती है? 0. Input pi over 2 in this, and that gives you a equal to 2 into pi over 2, which is pi. So जो a का interval आता है, that is from 0 to pi. Okay, so now we find the basic angle. Sine alpha equals 1 over 2. Find the basic angle from your calculator, keeping in mind that the angle has to be in radians. Alpha turns out to be pi over 6 from this. Okay, now sine is positive, 1 over 2. Sine positive kahan par hota hai? Sine is positive in the first and the second quadrant. So you could either be here or here. These are the two possibilities. ये दो आपके क्वाड्रेंट्स पॉसिबल हैं और आपके दोनों इंटरवल में भी आ रहे हैं. 0 से पाई का आपका इंटरवल है, a का, दोनों इंटरवल में आ रहे हैं, तो आपके क्या पास क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? उससे a is either equal to pi over 6 or a is equal to pi minus pi over 6 in the second quadrant. Okay, so these are the two values of a that we get from this. अब हम क्या करेंगे? वापस सब्स्टिट्यूशन इनपुट कर दें. a was 2x, तो 2x वापस डाल दें इसके अंदर. You get 2x equals pi over 6 and 2x equals 5 pi over 6. And the values of x that you get from this are x equals pi over 12. That's one possibility. And the other possible answer that you're getting from this is x equals 5 pi over 12. These are the two possible values of x that we get from this. These are our answers for this part. Okay, let's move on. Let's move on to the next one now. Farah, it really depends on your current preparation. If you think you're well prepared for most of the topics, then you can do yearlies at this point. And using those yearly papers, try to figure out which particular topics you're losing more marks in. जिन topics में ज़्यादा marks कट रहे हैं, 2-3 papers करें, उनमें देखें कौन इन papers में ज़्यादा marks कट रहे हैं, उनके दोबारा से थोड़े से topicals कर लें, then come back to yearly papers and then identify if you have improved in them. और जो भी आपके topics जो हैं वो जिनमें आपके marks कम हो रहे हैं, फिर उनके topicals करें. So it's an iterative process like this. Okay, but everyone has a different situation. वो depend करता है कि आपकी अभी current जो है preparation कैसी है. अगर आपकी topical preparation इतनी अच्छी नहीं है, तो it might be a better idea to do topicals at this point, because अगर आप सिर्फ A2 कर रहे हैं, तो you still have time. आपका paper 3 12th को है, so आप topical पे आप maybe 1 week और spend कर सकते हैं, उसके बाद आप yearly move करें. But it depends on what your current situation is. Anyway, let's start with this one. Question number 5 from this paper. It says the complex number 3 minus iota is denoted by u. Show on an Argand diagram with origin O the points A, B, and C representing the complex numbers u, u conjugate, and u conjugate minus u respectively. State the type of quadrilateral formed by the points O, A, B, and C. Now we can write down those points first of all. U is 3 minus iota. What about u conjugate? U conjugate क्या होएगा? 3 plus iota. What about u minus u conjugate minus u?
can evaluate this as well. U conjugate minus U. This would give us 3 minus iota minus 3 plus iota. And what do we get from that? 3 and 3 get cancelled, minus iota, that gives us minus 2 iota. This is what U conjugate minus U is. So now you have to plot these points on an Argand diagram. Let's do that. We have two axes, real axis and the imaginary axis. Let's draw them here. This is the real axis, this is the imaginary axis. And now let's plot these points. Okay, आपको 3 units तक जाने, दोनों axes पे आप 3 units से चले जाएं. Remember how we prefer having a square grid, यानी दोनों axes के ऊपर almost same scale ले तो बेहतर होता है. 1 2 3 here, we have 1 2 3 here, we have minus 1 minus 2 minus 3, you have minus 1 minus 2 minus 3. Let's plot those points. 3 minus iota, where is that going to be? 3 minus iota, that's this point here. This is point U. U conjugate, that's 3 plus iota, that's going to be here. U conjugate minus U, that's minus 2 iota. That point is here. This is U conjugate minus U. And then finally, you have origin, O, that's this point. Now, what is this quadrilateral? आपने points to mark कर लिया. Now think about what quadrilateral this turns out to be. You can see on the diagram, this is a parallelogram. Okay, it's not a rectangle. I hope you realize that. Angle is 90 nahi hai. This is a parallelogram. Opposite sides equal hai or parallel hai. So you'll write that here. You'll say this is a parallelogram. Okay, all right, let's move on. And the next part, it says, express U conjugate over U in the form X plus Y iota. It's pretty straightforward. Let's do this very quickly. U conjugate over U, that is 3 plus iota divided by 3 minus iota. Now we have to represent this in X plus iota Y form. For that, we multiply and divide by the conjugate of the denominator. What's the conjugate of the denominator? The denominator is 3 minus iota. 3 minus iota का conjugate क्या होगा? 3 plus iota. उससे हमने multiply भी कर दिया, divide भी कर दिया. In the numerator, we have 3 plus iota का whole square. That becomes 3 squared, right? A plus B whole square. So A squared plus 2AB. So that's 2 into 3 into iota. That gives us 6 iota plus iota squared. That's what we have in the numerator. And the denominator, we get A minus B into A plus B. That's A square minus B square. So that's 3 squared minus iota squared. Let's simplify this. In the numerator, we have 9 plus 6 iota. Remember, iota square की value क्या होती है? -1. So we have -1 here. Divided by 9 minus iota square again is -1. So we have 9 minus -1. And that gives us 8 plus 6 iota divided by 10. If you want to write it separately, it would be 8 over 10 plus 6 over 10 iota. We could simplify this, and this turns out to be 4 over 5 plus 3 over 5 iota. This is what U conjugate over U is. We had to evaluate this. ये हमने कर लिया. ठीक है? Let's move on. That was pretty straightforward. Let's look at the next part. It says, by considering the argument of U conjugate over U or otherwise, prove this thing. जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म आती है ना, उसने कोई इक्वेशन दी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, tan इनवर्स की टर्म्स के अंदर, you always have to use those rules कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके आर्गुमेंट्स ऐड हो जाते हैं, और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड होते हैं उनके आर्गुमेंट्स सबट्रैक्ट हो जाते हैं. सो यू एसेंशियली हैव टू यूज दोज रूल्स हियर. ओके, आपने करना क्या है, आपके पास एक u है, एक u conjugate है. लेट मी राइट दोज हियर. You have u, that is
3 minus iota, you have u conjugate, that's 3 plus iota. And you also have u conjugate over u, which is 4 over 5 plus 3 over 5 iota. अब ये देखें तीनों, इनफैक्ट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर u, ये तो आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर. इसका हम देख लेते हैं क्या आर्गुमेंट आते हैं. तीनों के आर्गुमेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे. दिया तो नहीं भैया. इन तीनों के आर्गुमेंट्स निकालने पड़ेंगे. कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले बेसिक एंगल फिगर आउट कर लेते हैं. tan alpha equals 1 over 3. Alpha equals tan inverse of 1 over 3. That's the basic angle that we have. But remember, u is below the x-axis. ये नीचे वाली साइड के ऊपर है. तो इसका आर्गुमेंट हम कैसे लिखते होते थे? इसका आर्गुमेंट नेगेटिव लिखेंगे, बिकॉज आपके आर्गुमेंट की रेंज -π to +π होती है ना. तो ये जो नीचे वाला आर्गुमेंट है ये नेगेटिव आएगा. तो हम क्या लिखेंगे? आर्गुमेंट ऑफ u therefore is minus tan inverse of 1 over 3. इसको डेसिमल्स में नहीं कन्वर्ट करें, बिकॉज इसमें जो इक्वेशन प्रूव करने के लिए कहा हुआ है इसमें एग्जैक्ट नंबर्स यूज किए हुए हैं. सो यू आर गोइंग टू लीव इट एज इट इज. ओके. Similarly, you find the basic angle for u conjugate. That's going to be the same. Alpha यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा होगा? Tan inverse of 1 over 3, and that gives you the argument of u, which is going to be just tan inverse of 1 over 3. क्योंकि ये first quadrant के अंदर है, u conjugate is in the first quadrant, तो जो इसका basic angle है वही इसका argument है. Argument of u conjugate is tan inverse of 1 over 3. Now, what about the argument of u conjugate over u? Let's figure this out as well. इसके लिए सबसे पहले basic angle निकालने हैं उसी तरह से. Tan alpha equals 3 over 5 over 4 over 5. This is in the first quadrant as well. Real part भी positive है, imaginary part भी positive है. First quadrant के अंदर है, इसका मतलब है इसका argument भी positive होगा. Basic angle is tan inverse of 3 over 4, because 5 and 5 would cancel. आपके पास 3 over 4 बचा वहां से. So argument इसका क्या हो जाएगा? Argument of u conjugate divided by u, that is equal to tan inverse of 3 over 4. ये इन तीनों के conjugates आ गए आपके पास. Now u conjugate over u, इसका argument, remember ये दो complex numbers divide हो रहे हैं, u conjugate divided by u. You can use this relation. You can say argument of u conjugate over u, this should equal argument of u conjugate minus the argument of u. Right? जब divide हो रहे होते हैं complex numbers, उसका जो result आता है उसका argument क्या होता है? Individual complex numbers के arguments का difference. Okay? So when two complex numbers are divided, their arguments are subtracted. ये values input कर दें इसके अंदर. U conjugate over u का argument, that's tan inverse of 3 over 4. On the other side, we have argument of u conjugate, which is tan inverse of 1 over 3. Subtract from that argument of u, which is minus tan inverse of 1 over 3. And now from this, we get tan inverse of 3 over 4. That equals tan inverse of 1 over 3 plus tan inverse of 1 over 3. That becomes 2 into tan inverse of 1 over 3. And that is what we had to prove here. That's quite some working for 2 marks, but yeah, that's what you have to do. You have to find the arguments for each of them and then connect them using this equation. Okay, ये equation लिखना जरूरी होगा ताकि एग्जामिनर को आपने शो करना है. ये आंसर तो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपने शो करना है वो कैसे आ रहा है. So ये वाला स्टेप बहुत जरूरी होगा, this step. Okay. Now, some of you might just be able to do it directly. आप ये arguments लिखे बगैर भी कर सकते हैं. That's okay. You can just input values here like this and then simplify that to show what is required there. Okay, that was part C of this question. Let's move on and do question number 6 now. Okay, in question 6, it says the parametric equations of a curve are x equals 1 over cos t and y equals ln of tan t, where t is between 0 and pi over 2. We need to show that dy over dx equals cos t over sine square t. Okay, so we have parametric equations. इन दोनों को अलग-अलग differentiate कर लेते हैं. 1 over cos t, we could write that as cos
t whole raised to power -1 if you want. क्वेश्चन रूल भी यूज कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, इसका ऊपर ले बस पावर -1 हो जाएगी. y equals ln of tan of t. Now what is dx over dt? First of all, dx over dt, power function is the outer function. You start from the outer function, remember, -1 से मल्टीप्लाई किया, पावर रूल अप्लाई करेंगे, -1 into cos of t as it is. पावर में क्या होएगा, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा. So we multiply by the power, subtract 1 from the power, it becomes cos of t power -2, and then multiply by the derivative of the base of the power. Cos t का derivative क्या है, minus sin t. Cos का derivative minus sin होता है. Okay, now we can simplify this, and that gives us minus into minus, that becomes plus, and we could write this as sin t over cos square t. You could write this as tan t over cos t, but देखा उसने प्रूव करने के लिए जो कहा हुआ है उसमें उसने tan नहीं यूज किया हुआ कहीं पे, so it's better not to use that. इसको sin और cos की terms में ही रहने दें. This is dx over dt. This is one thing that we had to find. Now this is the second equation that we have, y equals ln of tan t. Now what's the outer function in this case? You start from the outer function. The outer function here is ln. ln of something, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी अंदर वाला पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है. So it becomes dy over dt equals 1 over tan t. Okay, this goes to the denominator, and then you have to multiply with the derivative of this thing as well. Tan t का डेरिवेटिव क्या होएगा, tan का डेरिवेटिव होता है secant square, so it becomes secant square t. Now remember, we want your final answer to be in terms of cos and sin, तो उसको sin और cos में convert कर लेते हैं. 1 over tan t can be written as cos of t over sin of t, right? Tan t का reciprocal, that's cos t over sin t. That's like cot t, cot is cos over sin. Secant square को भी आप cos में convert कर लें, and that's going to be 1 over cos square t. Now you simplify this, one cos gets cancelled with 1 power of cos here, and that gives us 1 over sin t into cos t. Okay, we have dx over dt and dy over dt. Now we can use the chain rule. We are looking for dy over dx, right? dy over dx क्या होगा using chain rule? You have two fractions. First fraction में numerator dy होगा, second fraction में denominator dx होगा, और दरम्यान में आपके पास इन spaces में third variable आ जाएगा. What's the third variable? The third variable is t here, so we have dy over dt into dt over dx. Now what is dy over dt? We found that here, 1 over sin t into cos t. Let's input that here. And then you have dt over dx. हमने dx over dt निकाला है, उसका reciprocal कर लें, and that's going to give you cos square t divided by sin t. Let's simplify this now. 1 power of cos gets cancelled with this cos. Numerator में आपके पास क्या बचेगा, cos of t. Denominator में you have sin t and sin t, that gives you sin square t. And that's exactly what you were looking for. dy over dx turns out to be cos t over sin square t. Okay, that's your final answer. Let's move on. Part B. It says find the equation of the tangent to the curve at the point where y equals 0. Tangent की equation निकालनी है. Tangent is a straight line. Straight line की equation के लिए you need two things: a point and the gradient. Okay. So the equation of the curve is y equal to. Okay, we don't have the equation of the curve. In fact, वो parametric equations हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. X equals 1 over cos t and y equals ln of tan t, right? These are the two equations that we have. उसने कहा है आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए जहां पे y की वैल्यू 0 है, राइट? तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, y की वैल्यू 0 इनपुट कर दें, तो देखते हैं हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर x क्या आती है. बिकॉज रिमेंबर वी नीड अ पॉइंट एज वेल, हमको पॉइंट चाहिए. तो पॉइंट हमारे पास y तो है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू भी चाहिए. लेट्स फिगर दैट आउट. यहाँ पे हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 इनपुट कर देते हैं,
When we input y equal to 0, that gives us 0 equals ln of tan t. Okay. Now, base of ln is e. That's going to go to the other side and become the base of 0. Yes, ki base e दूसरी side पे जाएगी, 0 की base बन जाएगी. That's going to give us e raised to power 0 equals tan of t. E raised to power 0 is 1. So we get tan t equal to 1 from this. अब यहाँ पे देखें उसने t का इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेकर पावर 2 तक, यानी कि t जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है सर. tan t equals 1, tan is positive, उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख लें क्या आता है, इसका बेसिक एंगल क्या आएगा. Radians में it's going to be pi over 4. Tan inverse of 1 is going to give you pi over 4. So the value of t that we get from this is pi over 4. Now what we can do is we can input this value in the other equation to get the corresponding value for x, and that gives us x equals 1 over cos of pi over 4. Now input this value. Cos of pi over 4 क्या होता है? It's square root of 2 over 2. All right, your calculator will give you square root of 2 over 2. 2 goes to the numerator, and that gives you 2 over square root of 2. And that is just square root of 2. Okay, so this is the value of x that we get. Do not convert this to decimals. जब आपने equation लिखनी होती है, decimals में values हम नहीं लगते, इसको exact form में ही रहने देंगे आप. ठीक है? So this is the value of x that we have. We have a point now. The point is square root of 2 and pi over 4. ये x और y की values आ गई आपके पास एक particular point. Sorry, not pi over 4. Y की value यहाँ पे 0 थी in fact. This is one point that we have. The other thing that we need is the gradient of the tangent. Gradient of tangent कैसे आएगा? आपके पास dy by dx है. dy by dx के अंदर आप इसको input कर देंगे. dy by dx is equal to cos t over sin square t. इसमें t की value input कर दें. Cos of pi over 4 divided by sine of pi over 4 whole squared. Cos pi over 4 is going to be square root of 2 over 2. Sine pi over 4 is also square root of 2 over 2. और इस पूरे का square. So what do you get from this? आप simplify करेंगे, एक वो cancel हो जाएगा, आपके पास एक तरह से यही चीज बच जाएगी, and that is going to give you square root of 2 as well. So the gradient of this curve also turns out to be square root of 2. This is the gradient of the tangent. जब आप t की value pi over 4 input करते हैं derivative के अंदर, आपको ये gradient की value मिल जाती है. So you have the gradient now of the tangent and you have a point. You can write down the equation, right? What does the equation turn out to be? It's a straight line. Y minus y1 equals m into x minus x1. Let's input values. Y1 is 0. M is square root of 2. X1 is also square root of 2. Let's simplify this. This gives us y equals square root of 2 times x minus square root of 2 into square root of 2. That gives us 2. This is the equation of the tangent that we end up getting from this. Y equals square root of 2 times x minus 2. And that's our final answer that we get from this. Okay, I hope that makes sense. That was question number 6 from this paper. Let's move on. Question number 7, this is partial fraction. It's a proper fraction. ये आप कर लेंगे. Second part में binomial है. So this is a standard 10-mark question. I hope all of you get this completely right every single time. इस पे careless errors please नहीं करें. अगर आप ये इसमें errors करेंगे तो paper 3 का आपका grade जो है वो affect हो जाएगा. Okay, so ये आसान वाले questions आपने बिल्कुल गलत नहीं करने. इसमें कोई careless errors भी नहीं होने चाहिए. And that comes with practice. So make sure that you do enough practice in this. Every single exam that I check, 30-40% of the people at least end up getting this question wrong as well because the careless errors ho jate hain. Okay, so you can't afford that in Cambridge exams. आसान वाले questions में बिल्कुल marks नहीं lose कर सकते. Okay, अच्छा. So I'm going to skip that. तो आप कर लेंगे. Let's move on to the next one now. This is question number 8. Now, before we do this, just a reminder to like the stream if you haven't already. That helps with engagement, so more people can find it later in their YouTube search. If you do that, also leave any comments if you have any questions. And also, you can find a lot of useful content
on at other places on my channel. So if you look at the description below, you'll find links to playlists of the different crash courses that I recently did on paper 1, paper 3, M1 and S1. आपको उसका पूरा syllabus वहाँ पे covered मिल जाएगा. You also find some quick revision videos, which a lot of students find helpful every year for their last minute revision, not prep, revision के लिए. और फिर आपके पास yearly past papers की playlist भी है जिसमें आपको बाकी papers solved मिल जाएंगे that I've done until now from 2021 and 2022. In fact, March 2023 के papers भी उस पे आपको मिल जाएंगे. They are already solved. Okay, let's resume and do this question now. Question number 8 from this paper. It says at time t days after the start of observations, the number of insects in a population is n. The variation in the number of insects is modeled by a differential equation of the form dn over dt equals this thing, where k is a constant and n is a continuous variable. It's given that t equals 0 when n equals 100. We need to solve this differential equation, obtaining a relation between n, k, and t. Okay, so let's solve this differential equation. dn over dt equals kn raised to power 3 over 2 into cos of 0.02 times t. Okay? This is the equation that we have. Now, how do we start with this? How do we start solving this equation? We first have to separate the variables. Okay? t terms right पे रहने देंगे, n terms को left पे लाएंगे. इस n को अगर हम left पे लेकर आए तो ये क्या बन जाएगा? n raised to power minus 3 over 2. Denominator में होगा, उसको ऊपर लेके आएंगे तो power negative हो जाएगी, right? So minus 3 over 2 into dn. On the other side, you have k times cos of 0.02 times t into dt. So you've separated the variables. Once the variables are separated, you integrate both sides. Now, what's the integral of n raised to power minus 3 over 2? You add 1 to the power. It becomes n raised to power minus 1 over 2. Minus 3 over 2 plus 1, that's minus 1 over 2. You divide by this increased power. Minus 1 over 2 so आपने divide कर दिया. On the other side, you have k as a constant into cos of 0.02t. Cos की integration क्या होती है? Sine, so it becomes sine of 0.02t divided by the derivative of this part. Sine 0.02t का derivative क्या होता है? 0.02. We divide by that plus c, and that is the differential. That's the solution of the differential equation that you get, but you also have to find the value of c here. That is what we're going to be doing next. But before that, let's simplify this a bit. Minus 1 over 2, it's going to go to the numerator. 2 पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? Minus 2n raised to power minus 1 over 2. Now, this is 0.02 in the denominator. We can also take this to the numerator. We can think of it like this. कि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 1 over 0.02 into k into sine of 0.02t. Right? You could think of it like this. 1 over 0.02 साइड पे लिखा हुआ है और फिर बाकी ये है. तो इससे फायदा क्या होगा? सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 1 over 0.02 evaluate कर लें. ये क्या होता है? ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे. This is going to give you 50, I think. Or yeah, 50 आपको मिलेगा. Let me try that. 1 divided by 0.02. That is giving me 50. Yeah. 50 आ गया. So 0.02 यहाँ से denominator से खत्म हुआ. ऊपर आपके पास क्या बचा? 50 into k into sine of 0.02t plus c. Now let's find the value of c. For that, we have some information given. It says t equals 0 when n equals 100. When t equals 0, n equals 100. Let's put that value here, put that point here. T equals 0 and n equals 100. And let's see what we get from that. Minus 2 into 100 raised to power minus 1 over 2 equals 50k into sine of 0.02 into 0. That's just going to be 0 plus c. Minus 2 into 100 raised to power minus 1 over 2 is पूरे को आप calculator में डालने में ये होगा minus 2 over 10, I think. Yeah, we have to just not take the risk and put this whole thing on the calculator. That's giving me minus 1 over 5. Okay, so we have minus 1 over 5 on the right. On the left side, this term becomes 0 because sine 0 0 होता है. ये पूरी term 0 हो जाएगी. C की value आपके पास minus 1 over 5 आ गई.
And now this equation turns out to be minus 2n raised to power minus 1 over 2 equals 50k into sine of 0.02t plus c की जगह आप लिख देंगे minus 1 over 5. That's the equation that we end up getting from this. Okay. उसने कहा था solve the differential equation obtaining a relation between n, k and t. We are done with that. उसने कोई specific form नहीं मांगी हमसे. We could leave it like this if we wanted. कुछ करने की जरूरत नहीं है. This is just fine. Okay, इस तरह आप छोड़ सकते हैं. If you wanted, you could also convert it to another form, and that's also okay. All right. Yes, Heather. You only need to put this on any one of the two sides. Although, yes, your point is logical. दोनों sides पर integrate करें, दोनों side पे c होना चाहिए. But think about it. Left side पर अगर हम c1 डाल देते हैं और left side पे c2 डाल देते हैं, तो c1 को right side पे लेके जाएंगे, तो वो हो जाएगा c2 minus c1. And that's just another constant. C2 minus C1, one constant minus another constant, that's another constant, right? तो आपको दोनों साइड्स पे लिखने की जरूरत नहीं होती, आप किसी भी एक साइड पे C डाल देते हैं. You can put that on the right side or the left side, किसी भी एक साइड पे डाल देते हैं. Okay? So generally हम right पे डाल देते हैं, but आप left पे डाल सकते हैं. उससे सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे C की वैल्यू मेरी -1/5 आई है, अगर आप left पे डाल देते तो वो +1/5 आ जाती. The end result would be the same. Okay? Acha, that was the first part. Let's move on to the next one. In the next part, it says, given also that n equals 625, when t equals 50, find the value of k. All right, so this is the relation that we're getting. Let me copy this here. Yeah, हमारे पास result आया था पिछले part से. Okay, अब हम क्या करेंगे, ये values input कर दें इसके अंदर. N is 625, so it gives you -2 into 625 power -1 over 2. On the other side, you have 50 into k into sine of 0.02 times 50. Right? So, you input कर दें, देखें क्या आता है, 0.02 into 50. I think that's going to give me 1. Yeah, so that's 1. So it becomes sine of 1 minus 1 over 5. यहाँ से आप k evaluate कर लें. Right? Just put this whole thing on your calculator and see what you get. So basically, left side evaluate करें, -2 into, उसने exact value नहीं मांगी ना, तो calculator में पूरा डाल सकते हैं. That's okay. -2 into 625 whole raised to power -0.5. That's the left hand side. अब ये 1/5 उधर जाएगा, plus 1/5 हो जाएगा. ठीक है, so add 1/5 to this. And then this 50 gets divided. 50 over sine 1 वो जाके divide हो जाएगा वहाँ पे. So divided by 50 and also divided by sine of 1, keeping in mind your calculator should be in radian mode. Okay, that's very important. यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी. Okay, या देखना आपके पास क्या आती है. I'm getting 2.85 into 10 raised to power -3. इसको डेसिमल्स में लिखते हैं तो ये क्या होएगा, 0.0285. This is the value of k that I'm getting. Okay, let's move on to the next one. Walaikum assalam. Then let's look at the next one. The next one says obtain an expression for n in terms of t. Okay, now let's do that. So we already have this form. अब उसने कहा है कि n को आपने सब्जेक्ट बनाना है और उसके लिए उसने आपसे k की वैल्यू भी निकलवा ली है पहले. तो k की वैल्यू इसमें इनपुट कर देते हैं. Let's input the value of k here first of all and then simplify this. So the value of k that we have is 0.00285. 0.00285. We input that here. And now we make n the subject. n subject कैसे बनेगा? Let's think about that. अच्छा, let's simplify this first of all. इस 2 को जाके ना मैं right side पे divide कर रहा हूँ.
ठीक है, 2 को जाकर राइट पे डिवाइड कर लेते हैं, दैट गिव्स मी n over n raised to power minus 1 over 2, that equals, if I divide 2 on the other side as well and simplify everything there, let's see what we get from that. 50 into 0.00285 divided by minus 2, that gives me minus 0.07125 into sine of 0.02t. Minus 2 gets divided by this as well. So 1 divided by 5 divided by 2, that's going to give us 1 over 10, और वो positive भी हो जाएगा, so we have plus 1 over 10 here. We need n in terms of t. अब n को subject बनाना है, n को subject कैसे बनाए? Power यहाँ पे negative 1 over 2 है, right? Even if we were to square this, ये -1 होगी, हमें +1 चाहिए, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पहले तो ऐसे कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ले लें, राइट? रेसिप्रोकल लेंगे दोनों साइड्स के ऊपर, तो आपके पास लेफ्ट साइड को इनफैक्ट मैं ऐसे लिख लेता हूँ पहले, 1 over n raised to power 1 over 2. Now before you take reciprocal, in fact remember you can't take reciprocals of individual terms. आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका LCM लेना पड़ेगा. राइट साइड पे हम LCM ले लेते हैं पहले. राइट साइड पे LCM लेते हैं, आपके पास क्या आता है, 10 से मल्टीप्लाई होगा, and that is going to give you minus 0.7125 into sine of 0.02t plus 1 whole divided by 10. ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n raised to power 1 over 2, that equals minus, no, in fact 10 over minus 0.7125 into sine of 0.02t plus 1. Okay, that's the equation that we get. अब n की पावर 1 over 2 है, आपको n चाहिए, दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लें, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से आपका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और राइट साइड पे आपके पास इस तरह से होल स्क्वायर आ जाएगा. दिस इज n in terms of t that we were looking for. Okay, and it turns out this is only going to get you 1 mark at this until this point. Okay, तो यहां तक आपको सिर्फ 1 मार्क हुआ है अभी. इसके बाद वो कहता है find the greatest value of n predicted by this model. How do we do this now? The greatest value of n predicted by this model. Okay, अब देखें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है. इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप क्या करें, ऊपर आपके पास डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को हम 0 इनपुट कर दें, उससे आपके पास ये राइट साइड पे ये पूरी चीज 0 से इक्वल हो जाएगी. You'll get cos into 0.02t equals 0 from that, क्योंकि n 0 नहीं हो सकता, k 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 हो जाएगा. इससे आपके पास t की कोई वैल्यू आएगी, जो t की वैल्यू आएगी, इनफैक्ट मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, उनको आपको यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, जिससे आपकी छोटी वैल्यू आती है, दैट्स गोइंग टू बी जो जिससे आपको बड़ी वैल्यू मिलती है, दैट्स गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n. कि आप डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करें, that's one possible method, right? डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट किया, जो रिजल्ट आया t की जो वैल्यू आएगी उसको n में इनपुट कर दें. That's one possibility. Okay, but this is going to be pretty long. We could also think of it another way, because यहाँ पे देखें n किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, n डिपेंड कर रहा है t के ऊपर. t इधर आ रहा है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में कहां पर आ रहा है, सिर्फ साइन के अंदर आ रहा है. साइन के अंदर आपके पास, साइन फंक्शन के अंदर आपके पास p आ रहा है. Now all we have to do is just consider the extreme values of this sine function. साइन की एक्सट्रीम वैल्यूज आपके पास क्या क्या हो सकते हैं. Sine, remember, is between -1 and 1, right? -1 और 1 के दरम्यान में होता है. तो आपको क्या करना है, एक दफा इस चीज को आप क्या करें, इसको आप 1 से इक्वेट कर दें. दैट्स वन एक्सट्रीम वैल्यू. एक दफा इसको क्या करें, -1 से इक्वेट कर दें, और आप देखें दोनों पे आपको n की क्या वैल्यू मिलती है. ओके,
रिमेंबर साइन का जो रिजल्ट होता है वो -1 और 1 के दरम्यान में होता है ना, तो आप एक्सट्रीम पॉइंट्स पे चेक करें क्योंकि उससे आपको n की एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेंगी। तो आपने एक दफा क्या करना है, साइन वाले पार्ट को -1 से इक्वेट कर देना, एक दफा साइन वाले पार्ट को +1 से इक्वेट कर देना, और उससे आपने देखना है आपको क्या मिलता है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई दैट। साइन ऑफ 0.02t, इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, 1 इनपुट करते हैं, इससे देखते हैं n की वैल्यू क्या आती है, और साइन ऑफ 0.02t की जगह पे हम -1 इनपुट कर देते हैं, उसकी जगह पे देखते हैं n की वैल्यू क्या आती है। ये दोनों n की वैल्यूज देख लें, जो बड़ी होगी दैट इज गोइंग टू बी योर ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर में डालें, आपको बस देखें क्या आता है। ओके, लेट मी ट्राई दैट। 10 divided by -0.7125 into 1 plus 1 and then whole squared. Okay, so when I input 1 in place of that, that is giving me n equal to 1209.8. ओके, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अब हमें नहीं पता ये सही है कि नहीं, हमें पहले दूसरे में जाके इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले -1 इनपुट करना पड़ेगा, उससे देखना पड़ेगा उससे क्या होता है। So let me do that again. Okay, so for some reason it got removed from here, so I have to input that again. 10 divided by -0.7125 into -1 plus 1 and then whole squared. The second one is giving me 34.1. Okay, जो बड़ी value है, you would say this is the greatest n. This is the maximum possible value of n. आप decimals में लिख दें, that's also okay. लेकिन क्योंकि number of insects की बात हो रही है यहाँ पे, n represents the number of insects, right? Yeah. The number of insects तो integer होना चाहिए. You could also write it as 1 to 1 0. दोनों तरह लिख सकते हैं. It's going to be acceptable because यहाँ पे n को कहा हुआ है कि n is continuous, तो उसका आप decimal में भी लिख सकते हैं और integer भी लिख सकते हैं. And that's your final answer from this. Okay. That was question number 8 from the worksheet, from this paper. Now, how much time do we have? Okay. All right, let's have a 1 minute break and then we do the remaining 2 questions. We'll try to be quick about them and then we end. Okay, all right. So that was question number 8. We'll be starting question number 9 now. All right, let's move on. Question number 9. Let's do this. With respect to the origin O, the point A has position vector given by OA, which is iota, which is I, not it's not iota, I plus 5j plus 6k. This is a vector OA. Then we have a line L that has vector equation R equals 4i plus k plus lambda into this. Find in degrees the acute angle between the directions of OA and L. अच्छा, OA vector तो आपको पता है क्या है? OA vector is 1, 5, and 6. All right. What about the direction of the line L? This is the direction, right? That is -1, 2, and 3. Now, how do we find angle? Vector में आपके पास vectors में आपके पास एक ही formula होता है angles का, cos of theta, that is equal to a dot b divided by modulus of a into modulus of b. ठीक है, इसके अंदर values input करनी है आपको, simply dot product वो क्या आएगा, 1 into -1 plus 5 into 2, you should show this working, plus 6 into 3. That's the dot product divided by the modulus. 1 squared plus 5 squared plus 6 squared, ये first का modulus और दूसरे का
1 squared plus 2 squared plus 3 squared. ओके, अभी हमें evaluate करना है. राइट साइड पे देखते हैं हमारे पास क्या आता है. Numerator is going to give us -1 plus 10 plus 18, so that's 28 minus 1, which is 27. And the numerator and the denominator, we have square root of 36 plus 26, which is 62, square root of 62. And the second modulus is square root of 14. Okay, cos inverse निकाल लें. देखें आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आती है. डिग्रीज में चाहिए आपको, so calculator should be in degrees. acute angle चाहिए, इससे आपको acute ही मिलेगा because dot product positive है, तो डायरेक्टली acute angle मिलेगा. अगर आपके पास obtuse angle आ रहा होता तो क्या करते हैं, 180 में से माइनस कर देते, and that would give you the corresponding acute angle. Okay, cos inverse. Now you make sure that your calculator is in radian, is in degrees mode first of all. Let me change that. Cos inverse of 27 divided by square root of 62 and square root of 14. And this is giving me 23.59. So that's 23.6 degrees. That's the angle that we were looking for here. Okay, so that was pretty straightforward. Yeah, apne angle figure out karna tha. Okay, let's move on to the second part. It says find the position vector of the foot of the perpendicular from A to L. Now this is a standard question. Iski same working hai, wo aapko ek tarah se yaad hi honi chahiye working. It's slightly confusing, but you have to memorize this working, right? Because this is a standard question that comes every other paper. Foot of the perpendicular find karna, perpendicular distance find karna, unki bahut similar working hai. Now how is this going to work? आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है. लाइन क्या है? Let me write that here. In fact, एक point OA है. Let me write that point here first of all as well. That's 1, 5, and 6. And the line L is R equals, write this in vector form, 4I plus K. J component missing है, so that's 401 plus lambda into minus 1, 2, 3. This is the equation of the line that we have. ठीक है. ओके, अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा एक लाइन L है, इस तरह से लाइन L है, there is a point which is point A, that may be somewhere here. इससे एक perpendicular आ रहा होगा यहाँ पे, ये जहाँ पे इसको मीट करता है, that's called the foot of the perpendicular. ये point X है, X का आपने position vector find करना है. Now X is a point that lies on the line L. L के ऊपर lie करता है, तो X का position vector किस form का होएगा? वो line L की equation की form का ही position vector होएगा. ठीक है, जो line L की equation है उसी form का आपका point X का position vector होएगा. Let me just change the positions here, ताकि उसका नीचे पर लिख लें. ये आपकी line की equation है. क्योंकि point X line के ऊपर lie करता है, जो X का position vector होगा वो क्या होगा? That's going to be of this form: 4 minus lambda, 0 plus 2 lambda, that's just 2 lambda, 1 plus 3 lambda. Okay, OX is going to be of this form because this line represents every point on this line. This equation represents every point on the line L. X is the point on the line L, so X ka position vector bhi usi form ka hona chahiye, right? So that's OX. And now what we do is we say, let's find the vector AX using this. AX vector kya ho jayega? AX vector is equal to OX minus OA. What's the vector OX? OX हमने ऊपर लिखा है अभी, that's 4 minus lambda, 2 lambda, 1 plus 3 lambda. We subtract from this OA, which is 1, 5, and 6. इससे हमें क्या मिलेगा? AX vector मिल जाएगा. ये क्या आता है? 4 minus 1 is 3, so that's 3 minus lambda, 2 lambda minus 5, and 1 minus 6 is minus 5, so that's minus 5 plus 3 lambda. This is the vector AX. ठीक है, हमारे पास AX vector आ गया. Now, since the vector AX and the line L are perpendicular, हम क्या कहेंगे? AX vector is perpendicular to the direction. Remember, perpendicular का ताल्लुक जो है वो आपका direction vector से होता है. Angle जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है. So AX वेक्टर जो है वो डायरेक्शन ऑफ L के परपेंडिकुलर है.
तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. What's ax? Ax is 3 minus lambda, 2 lambda minus 5 and minus 5 plus 3 lambda. इसका डॉट प्रोडक्ट लाइन की डायरेक्शन वेक्टर से, which is -1, 2 and 3, this one, ये 0 होना चाहिए. -1, 2, 3. ये डॉट प्रोडक्ट जो है हमारे पास 0 आना चाहिए. इसको 0 से इक्वेट कर दिया. All right. Now let's evaluate this. 3 minus lambda into -1 plus 2 lambda minus 5 into 2. यहाँ पे साइन के बहुत एरर्स होते हैं स्टेप के अंदर. मेक श्योर दैट यू यूजिंग प्रॉपर ब्रैकेट्स. ब्रैकेट सही तरह से यूज करनी है, सब कुछ ब्रैकेट में डाल के लिखना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है. Let's simplify this. It gives us -3 plus lambda plus 4 lambda minus 10 minus 15 plus 9 lambda equals 0. Let's simplify this and see what we get from this. 14 lambda minus 28 equals 0 and the value of lambda turns out to be 2. Lambda 2 आ गया. अब OX का जो वेक्टर था उसके अंदर lambda की जगह 2 डाल दें, आपके पास वो वेक्टर आ जाएगा. So OX वेक्टर क्या था? 4 minus lambda, 2 lambda and 1 plus 3 lambda. ये आपका OX था, X का पोजीशन वेक्टर. इसमें lambda की वैल्यू 2 डाल दें, you'll get the position vector of the point X, which is the foot of the perpendicular, and that's what we were looking for. 4 minus 2 is going to give us 2. 2 into 2 is going to give us 4, and 1 plus 3 into 2, that gives us 7. This is the position vector of the foot of the perpendicular that we wanted. Okay, this is your final answer. Okay, now in the last part it says, hence find the position vector of the reflection of A in the line L. Reflection of A in the line L. How do you find that now? You have this line L. You have a point X here. This is the position vector find kiya bhi. You have a point A here. What you have to find is the reflection of the point A in this line. So that may be somewhere here. Let's call this A dash. This is what we're looking for. आपको X का position vector पता है, right? ये क्या था? X का position vector कितना था? हमने यहाँ पे find किया 247. X is 247. So यहाँ पे हम side पे लिख लेते हैं. In fact, we know OA vector is 156. ये ऊपर लिखा हुआ था. And OX vector is 247. One way of thinking about this is कि आप देखें आपको A से X पे जाने के लिए क्या करना है. देखिए ये एक तरह से उसके कोऑर्डिनेट्स भी आप समझ सकते हैं. अगर आप कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखें, ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके X के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो A से X पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? A से X पे जाने के लिए, if I were to write it like this, 156, इससे आपको X पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? You have to add 1 to the X component, you have to subtract 1 from the Y component, and you have to add 1 to the Z component. यही चीज आप आगे भी कर रहे होंगे. Add 1 to the X component, subtract 1 from the Y component, add 1 to the Z component, and that is going to give you 3, 3, and 8. And that is the position vector of the reflection that you have. इसका position vector ये हो जाएगा. ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में P1 में भी हम इस तरह करते थे, वेक्टर मेथड यूज करके. एक साइड पे पॉइंट होता था, उसकी रिफ्लेक्शन फाइंड करनी होती थी. तो हम देखते अच्छा A से X पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो उससे आगे X से A पे भी, A डैश पे भी आप उतने ही यूनिट्स आप जाते जाते हो आगे. ठीक है. So we get 3, 3, 8 from this. This is the position vector of the reflection. Okay. I hope that makes sense. Subtract करके
तो आपके पास नहीं आएगा. How does that make sense? I'm not sure, Heather, what you mean by that. Yes, planes are not included. Planes आपके syllabus में नहीं है अब. ठीक है, वो पहले होते थे, अब syllabus का part नहीं है. Achha, so that was question number 9. Let's do question number 10 very quickly now. It says the constant a is such that the integral of x squared into ln x with respect to x is 4 with limits a to 1. Show that a equals this thing. Okay, now this requires integration by parts. It's going to be slightly long. Let's just do it. Okay, so we have a product here. X squared into ln x. प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने का हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, दैट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अनलेस उसने क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूशन दी हो, फिर आप सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं दी हुई है, देयर इज ओनली वन वे वी कैन इंटीग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो दैट्स व्हाट वी यूज हियर. वी से लेट्स डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रल ऑफ x square into ln x with respect to x with limits 1 to a. This is equal to 4. या पे प्रूव करना है, या let's evaluate this. No, in fact it's given. ये उसने बताया होगा कि 4 के इक्वल है. Let's keep it as it is. इस इक्वेशन को आपने आगे सॉल्व करके ये प्रूव करना है कि ये आपके पास ये बन जाता है. ओके, लेट्स ट्राई दैट. इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये प्रोडक्ट है, इस पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा. नाउ रिमेंबर द फॉर्मूला दैट यू हैव फॉर दैट. फॉर्मूला शीट में इससे लिखा होता है u into dv over dx. इसका integral with respect to x, that is equal to uv minus integral of v into du over dx with respect to x. In short form, you can write it like this. You can say this is uv dash ka integral, that is equal to uv minus integral of vu dash. Right? That's what this formula looks like, essentially. ठीक है, formula sheet में ये दिया होगा, आप इसको इस तरह से short form में लिख सकते हैं. Now, how is this going to work? The first thing we need to do is we need to figure out what we are going to take as u and what we're going to take as v dash. How do you figure that out? We can use ILATE for that. कौन से दो functions हैं हमारे पास? We have an algebraic function x square, that's algebraic. The other function is logarithmic, and that's L here. Okay, जो भी left पर आ रहा होगा वो u होगा, जो right पे आ रहा होगा v dash होगा. तो log जो है वो left पर आ रहा है तो वो u होना चाहिए, और algebraic right पे आ रहा है तो वो v dash होना चाहिए. Let's write that down here. U is going to be equal to ln of x, and v dash is going to be x square. Okay, so it turns out we might actually not have to do integration of parts twice. एक दफा करने से हो जाएगा ये. So yeah, I was thinking the other way around. ये एक दफा करने से हो जाएगा. v dash equals x square. अब आपको क्या करना है? u equals ln x है, इससे आपको u dash figure out करना है. What does that turn out to be? ln x का derivative, that's 1 over x. v dash आपके पास x square है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या आ जाएगा? x cube over 3. These are the 4 things that you need. अब इसको इनपुट कर दें यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर. लिमिट्स रिमेंबर 1 a to 1 है, 1 to a है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी, अब बाद में लिख लेंगे. फॉर्मूला में क्या आ रहा है? u into v. Let's write u ln x into v. v is x cube over 3. Subtract from that integral of v as it is. v is x cube over 3 into u dash, which is 1 over x. इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, राइट साइड पे आपके पास इस तरह से 4 है. अगर आप लिमिट्स इनपुट जब कर देंगे तो लिमिट्स इनपुट करके राइट पे रिजल्ट आपके पास 4 आना चाहिए. लेट्स राइट दैट डाउन हियर. एंड नाउ ये इंटीग्रेट करना है. Let's simplify this. First of all, you have x cube over 3 into ln of x minus, let's write this constant outside, you have 1 over 3 into integral of x square with respect to x. ठीक है, क्योंकि कैंसिलेशन हो जाएगी, x कैंसिल हो गया एक पावर के साथ. You have x square in the numerator now. x square का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x square का इंटीग्रल हो जाएगा x cube over 3. So you have x cube over 3 into ln of x as the first term here. Subtract from that 1 over 3 into x cube over 3. This thing with limits 1 to a should equal 4. Okay, let's input the limits now. X square लिखेंगे. I'm not sure what does that mean. Okay, all right. So I hope that question was answered. अच्छा, 1 to a ये आप input कर दें इसके अंदर.
a input करते हैं पहले. Let's see what that gives us. That gives us a cube over 3 into ln of a minus 1 over 3, in fact 1 over 9 into a cube. Subtract from this the case when we input 1. When we input 1, we get 1 over 3 into ln of 1 minus 1 over 9 into 1 cube. That should equal 4. Let's simplify this, and that gives us a cube over 3 into ln of a minus a cube over 9. ln 1 is 0, so your term 0 ho jayegi. Minus into minus, that becomes plus, so you have plus 1 over 9 there. And this equals 4. अब आपको क्या करना है, देखें, एक a को आपने एक साइड पे रखना है और बाकी सब दूसरी साइड पे ले जाना है. तो ln a दूसरी साइड पर आ रहा है, ln a वाला जो a है वो दूसरी साइड पे ले जाएं और दूसरे वाले a को आप पहले रख लें. So Heather, I'm not sure what you mean by that. Maybe you do it, you're used to doing this another way. Let me just complete this and I'll figure out if there's an error in this, and then we'll go back to it, okay? अच्छा, एक a को आपने subject बनाना है, तो let's make this a the subject, because दूसरे वाले में ln आ रहा है, उसको आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है. ओके, अच्छा, पहले तो 1 over 9 को वहां पे ले जाते हैं. 1 over 9 को वहां पे ले जाएं और इस a क्यूब को आप यहाँ पे कॉमन ले लें इन दो टर्म्स में से. सी व्हाट दैट गिव्स अस. a क्यूब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 over 3 into ln a minus 1 over 9 inside the brackets. ये वाला 1 over 9 दूसरी साइड पे चला गया. 4 minus 1 over 9, let's see what that turns out to be. 4 minus 1 divided by 9, that is giving me 35 over 9. ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं. Before we can take this to the other side, we have to take LCM. LCM लेंगे तो नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर आपके पास क्या आ गया, 3 into ln of a minus 1. Okay, and now just take this thing to the other side. In fact, 9 और 9 तो cancel हो जाएंगे. And what are we left with? We have a cube equals 35 divided by 3 ln a minus 1. And yeah, that's what we have. 35 over ln a 3 ln a minus 1. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी पावर 1 over 3 ले लेंगे, because right left पे a cube आ रहा है, हमें a चाहिए सिर्फ. दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 over 3 times ln of a minus 1 whole power 1 over 3. Okay, so that's correct. This is what we're getting. Integrate हमने किया, limits input कर दी और हमारे पास उसको rearrange करके ये result आ गया जो उसने मांगा हुआ था. ठीक है? Okay, let's move on. The second part, it says, verify by calculation that a lies between 2.4 and 2.8. What do we do for such questions? First of all, we have to convert our equation to this form. F of x equals 0. एक side पे सब कुछ आ जाएगा, दूसरी side पे सिर्फ 0 आएगा. ठीक है? So we can write this as a minus 35 divided by 3 into ln of a minus 1 whole power 1 over 3. And this equals 0. अब हम क्या करेंगे? We can say, let's call this thing f of x, and all that we have to do now is input 2.4 in this once, वो देखते हैं क्या value आती है, and then input 2.8 in this. इन दोनों पे देखें क्या values आती है. ठीक है, ये बस calculator में डालें. एक दफा हम क्या करते हैं, 2.4 input करते हैं. 2.4 minus bracket 35 divided by 3 times ln of 2.4 minus 1. Let's close the bracket, and this is giving me minus 19.1. 2.8 कर देते हैं आप उसको. अच्छा, मैंने पावर नहीं ली, सॉरी. So power 1 over 3 यहाँ पे मैंने मिस कर दिया एंड पे. So power 1 over 3 होनी चाहिए. Raised to power 1 divided by 3.
So this is actually giving me minus 0.38. So normally numbers जो result आते हैं ना वो 0 के आसपास ही कहीं पे होना चाहिए, वो minus 19 बहुत बड़ा number आ गया. So that should raise an alarm. Minus 0.38. That's what I'm getting. Okay. 2.8 input करते हैं, उससे देखते हैं क्या आता है. 2.4 को replace करके 2.8 डाल दें. And that is giving me 0.24. That's plus 0.24. Now one value is negative, the other is positive. All that we have to do now is just write down a statement. This statement लिखना ज़रूरी होगा. We'll say f of 2.4 and f of 2.8 have opposite signs. Since they have opposite signs, that proves that A lies, which is the solution of this equation, A lies between 2.4 and 2.8. Okay, ये statement लिखना जरूरी होगा, अपने words में लिख दें. आपने कहना sign change हो रहा है, that's why a solution lies between these 2 points. ठीक है, let's move on to the last one. Now it says use an iterative formula based on the equation in part A to determine A correct to 2 decimal places, give the result of each iteration to 4 decimal places. अब इस equation को use करके आपने एक iterative formula बनाना है. इसमें already आपने उसने वो वाली form दी हुई है. एक A आपके पास एक side के ऊपर है, बाकी सब कुछ side के ऊपर है. Let's write that down. A equals 35 over 3 ln A minus 1 whole raised to power 1 over 3. What is the iterative formula going to look like? Left वाले के साथ आप n plus 1 डाल देंगे, right? You get A n plus 1 here. On the right side you have A n. ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आप क्या इनपुट करेंगे, उसने कोई वैल्यू नहीं दी हुई है. हमने प्रूफ किया है कि 2.4 और 2.8 के दरमियान में लाई करता है. तो हम कहेंगे लेट्स पुट A1 इक्वल टू 2.6, उनका मिड पॉइंट. ठीक है, 2.4 2.8 का मिड पॉइंट. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू पुट 2.6 ऑन योर कैलकुलेटर, प्रेस द इक्वल बटन. ये आपका आंसर बटन में सेव कर देगा. फिर आपने कैलकुलेटर में ये फॉर्मूला डाल देना है, 35 over 3 ln of answer minus 1 whole raised to power 1 over 3, and that is going to give you the next values for A2, A3 and so on. ठीक है, ये देखते हैं हमारे पास क्या आता है. Okay, so let's input 2.6, press the equal button. Now write down the formula. (35) divided by 3 ln of answer minus 1 whole raised to power 0.33333. ठीक है, ये आप देख लें आपके पास क्या आता है. Oh, 35 over this, is this correct? Yeah, okay, ठीक है. Let's evaluate this. So the first iteration that I'm getting from this is 2.6 to 669. ये आ रहा है मेरे पास. उसने कहा 4 decimal place लिखना है आपने, तो उसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? It's going to become 2.627. Okay, this is A2. Press the equal button again and see what that gives you. 2.6423. A4 2.6341. A5 2.6384. अभी देखें स्टेबल नहीं हुआ. अभी ये 2.63 पे राउंड ऑफ हो रहा है, ये 2.64 पे राउंड ऑफ हो रहा है. ठीक है, अभी बिल्कुल स्टेबल नहीं हुआ, आपको आगे जाना है अभी. A6, let's evaluate that. That's giving me 2.6362. 157 आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2 आ जाएगा लास्ट डेसिमल प्लेस. And you have A7, and that's giving me 2.6373. Now this is pretty much enough. क्योंकि आप देखें ये भी 2.64 पे राउंड ऑफ हो रहा है, ये भी 2.64 पे राउंड ऑफ हो रहा है, ये भी 2.64 पे राउंड ऑफ हो रहा है. You have 3 consecutive iterations that are rounding off to the same number to 2 decimal places. So you can stop at this point. This is enough, and that's going to give you the answer 2.64. If you want, you can go one more step just to confirm.
नेक्स्ट वैल्यू भी आपके पास 2.637 ही आती है, तो वो भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। ऑलराइट, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ए जो है वो क्या हो गया 2.64 टू डू 2 डेसिमल प्लेसेस, दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपको लिखना था यहाँ पे, एंड दैट्स द आंसर दैट वी गेट इन दिस लास्ट पार्ट। Okay, I hope that makes sense. That concludes our paper. I hope this was helpful. If you found this helpful, make sure that you leave a like there and subscribe to the channel if you haven't already. And you can find a lot of other content in the description below as well. I'll see you again in the next video. Allah Hafiz.